It is the last topic of this chapter. We have studied the Echo theorem and factor price equalization theorem and the some empirical test of Echo theorem. We have understand it that a nation will export the commodity which is use the cheaper factor of the nation abundantly. So a nation should recognize the commodity of its comparative advantage, and this will be the commodity which use the nation's abundant and cheaper factor intensively. Also, the nation should specialize in the production of that commodity, and it will export the that commodity to the other nation. And in our example, we saw that nation 1 was labor abundant and community X was labor intensive, and nation 2 was capital abundant and community Y was capital intensive. And so, according to our theory, nation 2 will specialize in the production of Y and will export the Y to nation 1, and nation 1 will specialize in the production of X and it will export the community X to nation 2. Now, there is one situation when Echo theorem does not hold and nor the factor price equalization theorem holds. And this situation is called factor intensity reversal. Factor intensity reversal mean that a nation that a commodity is capital intensive at one price ratio and labor intensive at other price ratio. मीन कि इनमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सब्सिट्यूशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल होगा किसी कम्युनिटी की प्रोडक्शन में. तो दिस कम्युनिटी बिकम लेबर इंटेंसिव इन लेबर अबंडेंट नेशन एंड कैपिटल इंटेंसिव इन कैपिटल अबंडेंट नेशन. सो अगर दोनों नेशंस की कंपेरेटिव एडवांटेज की कम्युनिटीज एक ही बन जाए वो सब्सिट्यूशन जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की वजह से, तो दोनों नेशन जो सी हैं दे विल ट्राई टू प्रोड्यूस एंड स्पेशलाइज द सेम कम्युनिटी, so they cannot exploit the same community to each other, so trade will not possible. ये इस तरह से है कि अगर नेशन वन जो सी है उसमें लेबर अबंडेंट है तो कम्युनिटी एक्स जो सी है वो लेबर को इंटेंसिवली यूज़ करती है. लेकिन अगर नेशन टू जो है उसके पास कैपिटल अबंडेंस में और चीपर है तो वो उस नेशन में कम्युनिटी एक्स जो सी है वो कैपिटल को अबंडेंटली यूज़ करके प्रोड्यूस किया जा सकता है. इसमें एग्जांपल दी हुई है, ये सामने आइसो क्वांट्स हैं फॉर कम्युनिटी एक्स एंड फॉर कम्युनिटी वाई. ये जो लार्जर है कर्व x to x, ये isoquant है for the production of community x. It shows the different combination of capital and labor which produce the same quantity of x. And y, it is an isoquant for the community y. It shows the different combinations of capital and labor which give us the same quantity of y or same units of y. हमने दोनों नेशंस के लिए सेम ही आइसोक्वांट्स ड्रा किए हैं क्योंकि आइसोक्वांट्स shows the techniques of production and we have assumed that technologies are same for the both nation. Isoquants are tangent to the budget line where there will be the production will be in the equilibrium. किसी भी जगह पे जहाँ पे आइसोक्वांट बजट लाइन से टेंजेंट बनाता है वहाँ पे इनकी स्लोप इक्वल हो जाती है, मीन कि उनकी प्राइस रेशो और सब्सिट्यूशन इक्वल हो तो देयर विल बी इक्विलिब्रियम. Now we see that when the price ratio करेंगे ratio of the capital to labor is 1 by 2. So X is produced at point A. It is the price ratio or the cost ratio 1 by 2, and when the commodity X is produced at point A, the ratio of capital to labor is 6 by 18. Here commodity X is labor intensive, but if we see that the price ratio changed from 1 by 2 to 2, this is the new price ratio line. The commodity X can be produced at point D at the same isocont, and at this point capital to labor ratio is 18 by 6. Now at point D, commodity X is capital intensive. So due to the change in price ratio, commodity X become from labor intensive commodity to capital intensive commodity, and its substitution of the factor of production is more flexible than the commodity Y. So when a commodity is labor intensive in labor abundant nation and capital intensive in capital abundant nation, in that situation Echo theorem does not hold nor the factor price equalization theorem is applied. इस फिगर की यहाँ पे डायग्राम
कि वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है वो यहाँ पे भी दी हुई है कि फिगर 5.9 shows that wage to rent ratio is 1 by 2. Community X is produced at point A, where the X isocont is tangent to the isocast line with slope W over R, which is equal to 1 by 2, and capital to labor ratio is 6 by 18, R of से 1 by 3 भी आप कह सकते हैं. Community Y is produced at point B, where the Y isocont is tangent to the same isocont line with slope W over R equal to 1 by 2, and capital to labor ratio is 9 by 12 or 3 by 4. Thus, at W over R is equal to 1 by 2, capital to labor is higher for commodity Y, so that commodity X is relatively labor intensive commodity. लेकिन दूसरी प्राइस रेशो जो कि 2 है, जब प्राइस रेशियो 1/2 थी तो एक्स का प्रोडक्शन पॉइंट ए है और कैपिटल टू लेबर रेशियो 6/18 है एक्स के लिए और वाई का प्रोडक्शन पॉइंट बी है और 9/12 रेशियो है कम्युनिटी वाई की प्रोडक्शन के लिए. सो एट दिस प्राइस रेशियो कम्युनिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव. अब हम दूसरी प्राइस रेशियो जो 2 है इसको देखते हैं. when the price ratio is 2 or 2 by 1 आप इसे कह रहे हैं जो पहले 1 by 2 थी तो x is produced at point D and y is produced at point C where the isoquant for the commodity y is tangent to the price line. Now we see that when wage to rent ratio is 2, commodity y is produced at point C where the y isoquant is tangent to the isocost line with the slope 2 एंड कैपिटल टू लेबर रेशियो वहाँ पे इसकी क्या है 12/9 है. कैपिटल टू लेबर रेशियो हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं इस तरह से. अगर पॉइंट सी है तो यहाँ से आप चेक करें यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज्ड आर 12 एंड यूनिट्स ऑफ लेबर यूज्ड आर ऑन एक्स एक्सिस विच आर 9. On y axis we are taking the units of capital and x is produced at point D. Capital units are 18 and labor units are 6. Now community X is produced at point D where the X isoquant is tangent to the same isocast line with slope W over R is equal to 2 and capital to labor is 18 while 6 is equal to 3. Thus, when the wage to rent ratio is 2, community X is relatively capital intensive community. जब वेज टू रेंट रेशियो 1/2 है तो कम्युनिटी एक्स क्या है लेबर इंटेंसिव है. जब वेज टू रेंट रेशियो 2 है तो कम्युनिटी एक्स इज कैपिटल इंटेंसिव कम्युनिटी. एज ए रिजल्ट कम्युनिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव एट वेज W over R is equal to 1/2 and capital intensive at wage to rent ratio 2 with respect to the commodity Y. And we say that factor intensity reversal is present. With factor intensity reversal, both the Echo theorem and the factor price equalization theorems are rejected because in that situation the nation which will have labor abundantly it will produce X because X can be produced with the labor intensive techniques, and the nation which is capital abundant it will also produce X because X can again produce with the capital intensive technique. And when both nations will produce the same commodity, both nations cannot export to each other the same commodity. So Echo theorem no longer predicts the pattern of trade. So factor intensity reversal refer to the situation where a commodity is labor intensive in the labor abundant nation and capital intensive in the capital abundant nation. This may occur when the elasticity of substitution of factors in production varies greatly for the two commodities. With factor reversal, both the H theorem and the factor price equalization theorems fail. अगर एक कम्युनिटी की प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स के यूज़ करने की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो देन देर आर द चांसेस ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल के. फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल मीन कि कम्युनिटी जो सी है लेबर अबंडेंट नेशन में लेबर इंटेंसिव हो जाए और कैपिटल अबंडेंट नेशन में कैपिटल इंटेंसिव हो जाए. इन दैट सिचुएशन एच थ्योरम विल नॉट प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. In the absence of factor intensity reversal, the H theorem is valid on the basis of the price definition of the factor abundance. The identity
of taste between countries is unnecessary to assume in this case. In the absence of factor intensity reversal, the HO theorem is true on the basis of physical information definition of the factor abundance only if the tastes are homogeneous and the similar between the कंट्रीज क्योंकि टेस्ट की वजह से प्राइसेस में डिफरेंस आ सकता है तो हमने पढ़ा था कि ये डेफिनेशन के कोई भी नेशन कैपिटल अबंडेंट है या लेबर अबंडेंट है तो एक तो फिजिकल टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं और दूसरा फैक्टर प्राइस की रेशो में डिफाइन कर सकते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल द एच ओ थ्योरम इज नॉट वैलिड